Very good morning, everybody. Can you hear me? Can you see the screen fine? Kindly write yes if you can hear me fine and see my screen fine. Okay, guys, so I'm Nikhil Doshi here today. So I'll be taking a pre-market session. So welcome to Pathfinders trainings, guys. So global market is down. So let's see the global market. If you just check the global market, SGX Nifty is showing 246 point down. So 16,934 is the level it is showing right now on the SGX Nifty. So our market will also open on a gap down, big huge gap down. You can say about 200 point down minimum. So we'll see accordingly what happening to the market. But if we see the chart, what is happening, it is already indicating over here. If you just open the daily chart, what was happening over here? If you can just check the daily chart of Nifty, Nifty is forming a head and shoulder pattern. You can just check this is the shoulder, this is the head, and this is the one more shoulder you can say. If this is broken, then you can expect a Nifty target around here. ओके अगर ये वाला नेकलाइन अगर ब्रेक कर देता है so there are two head and shoulder it is forming right now on the nifty अगर ये वाला नेकलाइन अगर तोड़ देता है और नीचे चला जाता है then you can expect a target around 15,700 or there is one more head and shoulder which was developing over here, okay, which is this one, this to this and this to this. ओके सो अगर ये वाला नेकलाइन जब तक तोड़ता नहीं है तब तक ये शॉर्ट नहीं होगा. ओके मेजर इज दिस, ये वाला नेकलाइन तोड़ेगा तो शॉर्ट है, तो जो अपना रेगुलर हेड एंड शोल्डर है वो हो जाएगा. अगर ये वाला नेकलाइन तोड़ता नहीं और यहाँ से वापस बाउंस आता है देन यू कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ओवर हियर. सो वी नीड टू सी व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. अकॉर्डिंगली वी कैन डिसाइड. अगर ये नेकलाइन नहीं तोड़ पाता है विद इन 1 or 2 days देन यू कैन एक्सपेक्ट अ बाउंस बैक ऑन द निफ्टी. But right now this it is showing a head and shoulder on the downside mode. Okay, so Nifty is about to, yeah, Vinit sir says Nifty is about to close the head and shoulder, but it should broke this head and shoulder. ये वाला break कर देगा, then it will move down. Okay, so we need to see over here. And today, what trade you can take it? It is a gap down open entry, so you can find little bounce back over here. Some of the long trade you can find it over here on the intraday. अगर 240 पॉइंट डाउन खुलता है तो ऑलमोस्ट एटीआर एग्जॉस्ट हो जाएगा. सो मार्केट का एटीआर कितना है? व्हाट इज द एटीआर ऑफ द निफ्टी? निफ्टी का एटीआर है राइट नाउ इट इज अराउंड 263 पॉइंट्स. मतलब 240 ऑलरेडी माइनस खुलेगा ऑलमोस्ट सिंस एसजीएक्स निफ्टी शोइंग 240 डाउन. ओके सो यू कैन एक्सपेक्ट इट ओवर हियर कि जहां थोड़ा बहुत बाउंस बैक आएगा, थोड़ा बहुत यू कैन से some point you can gain it from here. So you can look after for the long opportunity intraday, but overall do not carry forward your position until it is not giving you a clear cut sign. Okay, so look for the long opportunity since it's a gap down open entry. Okay, so we can look after for the long, but just for a bounce back of about 30-40 points on the nifty, not more than that. Okay, one more thing, if you can just check on the weekly chart of the nifty. Okay, weekly chart it was clear cut indicating before 2 weeks only market was on the double top. You can say on the distribution zone. This was the distribution zone, and from that it is from a bearish. You can say evening star pattern was formed. So this candle should be covered fully. So it got covered last week. Okay, now it is breaking that level, so you can expect over here on this zone as well. ये वाले zone से around bounce करना चाहिए. So this is the overall target. Market is looking short अगर daily chart का head and shoulder का neckline break कर देता है. So you can expect a target around 16,400 on the Nifty over here. What about Bank Nifty? If you just check Bank Nifty quickly, the same thing on the weekly chart on the distribution zone. Same thing was happened over here. Now it is a gap down open entry. So you can expect a target on the Bank Nifty around here at around 34,535 to 32,115. This is your target for the Bank Nifty. If we see the daily chart of the Bank Nifty is already trying to break this level.
ये वाला जो लो है उसके नीचे ही खुलेगा. सो नाउ वी नीड टू चेक ये वाला लेवल होल्ड करता है कि नहीं टुडे. अगर इसके नीचे क्लोज होता है देन यू कैन एक्सपेक्ट दिस गैप फिलिंग मिनिमम. Okay, so both is looking short, but since it's a gap down open entry and ATR will almost exhaust, then intraday we can expect some bounce back over here about you can say half ATR or something like that. So you can expect a long opportunity in that. Okay, so today you can look. We can't go short directly because it will be a gap down open entry. So we can look after for the long opportunity whenever while on an intraday. So what you can do, wait for first 5 minute on the chart on the Nifty future आपको देखना है. और जो भी 5 मिनट या 15 मिनट देखो, नॉट 5 मिनट 15 मिनट देखो, अगर पहला कैंडल पॉजिटिव मिलता है, जो जो भी हाई बनता है वो हाई के ऊपर यू कैन गो फॉर द लॉन्ग. सिंपल एज दैट. Okay, stock wise, guys, according to the market condition, we can select the stock today because it is a gap down open entry. So there is no point pre market, like before the market, we do analysis overall. But so we need to see it over there. Any suggestion for swing short? No. Right now, there is no swing shot on this. Why? I'll tell you the reason behind it. If you just check the monthly chart, Nifty is moving sideways right now. ये वाले रेंज में है right now. Okay, so this is the range right now of the Nifty. तो ये रेंज जब तक ब्रेक नहीं करेगा ऊपर या नीचे, तब तक ये मार्केट स्विंग के लिए लॉन्ग या शॉर्ट करने का है ही नहीं. यू कैन डू इट इंट्राडे मोर ओवर हियर और आइदर ऑन अ वीकली बेसिस. पोजिशनल लॉन्ग नहीं आएगा इसमें. प्लस बैंक निफ्टी भी अगर चेक करता हूं तो बैंक निफ्टी इज ऑल्सो मूविंग इन द रेंज. जब तक ये रेंज के ऊपर नीचे क्लोज नहीं होगा, till that time you can't expect a short or long for the swing on the Nifty and Bank Nifty both. Okay. So swing short means you are carry forwarding your trade for the next day in future segment. In equity segment you can't carry forward your trade. मतलब इक्विटी में जब आप सेल करते हो, शॉर्ट करते हो, that we need to compulsory square off the position by same day because हम इक्विटी में जब पोजीशन परचेस करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हम कंपनी के शेयर होल्डर हो जाते हैं. वी बिकम अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. तो इक्विटी में सिंस यू आर सेलिंग इट, वी आर शॉर्टिंग इट इन द मॉर्निंग कि शाम को डिलीवरी ला के दे देंगे, तो शॉर्टिंग इज नॉट अलाउड बिकॉज शेयर होल्डर का प्रॉब्लम होता है, शेयर होल्डर की क्वांटिटी का प्रॉब्लम होता है. सो फॉर दैट रीजन इन इक्विटी सेगमेंट शॉर्ट कैरी फॉरवर्ड करना इट्स नॉट अलाउड. ओके, इट्स नॉट अलाउड फ्रॉम द एक्सचेंज. आपको पेनल्टी चार्ज होती है इन केस अगर रह जाता है तो, एंड इट विल गो टू द ऑप्शन. बट इफ यू व्हेन इट बिकम about the futures and options that you can carry. Why? Because future the derivative segment futures is an, you can say, a promise type of a contract. You can say it's just a promise contract. You can say there is not the actual shareholding you are taking it over there. So उसमें आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. सो इन केस इफ यू वांट टू कैरी योर शॉर्ट पोजीशन, आपको लगता है कि कोई स्टॉक गिरेगा या कोई स्टॉक कोई इंडेक्स गिरेगा, एंड इफ यू वांट टू शॉर्ट इट फॉर द स्विंग के शॉर्ट टर्म के लिए मुझे सेल करके लेके जाना है कि शॉर्ट टर्म ये नीचे गिरेगा भाव इसका, दैट टाइम you can do it on the future segment. But future segment में with the lot size you need to do it. Okay, so future में आप short कर सकते हो. Okay, so this is the thing कि future में आप carry forward कर सकते हो because it's a virtual type of a contract or you can say a promise contract कि आप खाली market को वायदा कर रहे हो कि by expiry, अगर मैं निफ्टी का expiry देखता हूँ कि right now if I'll just add say derivative में निफ्टी ऐड करता हूँ, so I have a expiry with me कि 28 अप्रैल तक मैं आपको ये कवर करके दे दूंगा. Okay, so it's not allowed. You can just carry like if you want to do a short for the swing, then you can do it on the future segment, and it is not allowed onto the equity segment. Okay. Okay, guys. So bring me your stocks, guys. We'll just analyze the stock, but the entry and exit according to the market behavior we need to check. Okay, so let's check one by one. LTI. I'll take about 5 to 7 stocks first. Then we'll have time. We'll see more. I see different Renko 5 minutes and 30-day and intraday chart of 5 minutes. Like Renko formation is not equal. Can you please check and explain it? We need to check Pritesh. This is not the session. We can check that.
Okay, I'll give you a call after the session, or around 10 o'clock. I'll give you a call and we'll discuss about that. Okay, Golpal, Star Health, AWL, Adani Wilmar, Bandhan Bank, Infi. Okay, we'll start up with this first. Firstly, LTI. I always start with the monthly chart. Monthly chart पे पहले check करना है कि what is happening on the LTI. कि यहाँ से LTI was retracing at 50%. वहाँ से positive candle बना but higher high candle नहीं बना. So the selling pressure came again from that top and it is moving down. So now we need to check अगर ये 61% hold करता है और यहाँ से अगर bounce back करता है, then you can expect a position long in this. Okay, LNT, LTI you can say. Now let's come to the daily chart. What is happening over here? But monthly chart pe right now it is near about 61.8%. So I can look after for the long opportunity in this. So daily chart पे जाता हूँ तो daily chart पे if I'll check it over here, अगर मैं सारी चीजें remove कर देता हूँ, so in to marking the zone, if I'll just check the line chart, यहाँ पे एक bottom मिल रहा है. This is the bottom level. ये bottom level पे यहाँ पे ये zone हो गया. So under the zone, it is form a green candle. So today you can look after for the long opportunity on LTI. Monthly chart पे 61.8% का support है. Daily chart पे double bottom के आसपास है और you can say accumulation zone के आसपास है. So you can look after for the long opportunity today on LTI. Reliance. Reliance was a breakout. Overall target, if you can just check कि यहाँ पे अगर check करता on the daily monthly chart. So Reliance was retracing at around 61.8%. वहाँ से higher high close दिया था. So your target for the Reliance overall is around 2,915 is your target. Okay. So now if we check the daily chart, already इतना rally लिया and after this rally it has taken the pause. It is retracing over here. So Reliance overall trend is long. Okay, यहाँ से भी अगर if I'll just check on the daily chart, यहाँ पे daily chart पे भी around 38.250% से it is getting retraced. So same thing here to here, here to here. Okay, your target for the Reliance is around 2868 in short term and 2900 plus in a positional trade you can expect it over here. So Reliance is overall long. It's a doji type of a candle right now. Market is gap down over here. तो ये नीचे खुलेगा. And if it is retracing around 61% या 38.2% के आसपास या around 2694 के आसपास आज अगर मिल जाता है, मोस्टली ये मिल जाएगा because market is opening on the gap down open entry today. So around this level you can go long. 2695 के आसपास अगर मिल जाता है Reliance, you can think about it for the long on Reliance today. Okay, Reliance is you can look on for the long. Then Colpal, Colgate Palmolive, monthly chart. We can see over here Colgate Palmolive. It was broken this double bottom level. फिर यहाँ पे ये वाले zone से it is trying to move up. Okay, this is the zone for the Colpal. Correct, accumulation zone से it is moving up. Okay, so if I'll draw it from here to here to here. So your target is a 1685. Already इतना move आ चुका है. So overall target is 1685 in this. Let's see the daily chart. Daily chart पे it has given you a breakout. यहाँ पे जो level था उसके ऊपर ये close हो गया है. So some correction will come. Overall यहाँ से retrace होके where is the entry point? You can see Colpal is also a long, but you can long because already इतना बड़ा breakout आया है. So you can long around 50% के आसपास. यहाँ पे कहीं 1582 to 1574 यहाँ कहीं long मिलता है, then you can go for the long. Stop loss will be 1549 in this. So yes, you can think about it for the long. Your target for the coal pile is 1685. This is your target. So check risk to reward before entering. अगर minimum 1:2 मिल जाता है, then you can look after for this on coal pile. Long on that. Star Health. Recently IPO it came in December 2021. After that it is moving sideways. वीकली चार्ट अगर देखता हूँ तो डाउन ट्रेंड में है.
रैली डाउन ट्रेंड है कंटिन्यूशन में. यू कैन से इट्स अ कंटिन्यूशन पैटर्न. ये यहाँ पे रैली लिया बेस बना, रैली लिया बेस बना, रैली ले रहा है अभी. तो ओवरऑल यू कैन एक्सपेक्ट इट ओवर हियर. अगर सारे रैली देखोगे तो रिट्रेसमेंट लेवल पे ही मिलेंगे आपको. You can see over here 61%. You can see over here as well it was 61%. So continuation rally base rally hai. So overall target for this is here to here, here to here. I'm expecting a target around 585 on Star Health. इंश्योरेंस कंपनी है, 585 तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो. सो ओवरऑल डाउन ट्रेंड है. डेली चार्ट पे भी देख रहा हूँ तो इट्स गिवन यू ट्राइंग टू गिव योर ब्रेकआउट. ये ब्रेकआउट यहाँ पे आ गया. ओके, पॉजिटिव कैंडल बना है, बट आज अगर नेगेटिव हो गया दैट मीन्स इट्स अ रिवर्सल साइन. तो ओवरऑल टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ. आज अगर आइदर इट विल गिव यू एंट्री अराउंड हियर, यहाँ से रिट्रेस होके अराउंड 709 के आसपास आएगा. आइदर गैप डाउन ओपन होता है तो यू नीड टू वेट फॉर द क्लोजिंग. अगर आज ये क्लोजिंग नीचे हो गया दैट मीन्स इट्स अ शॉर्ट साइन. ब्रेकआउट हो जाएगा नीचे की तरफ. ओके, सो लुक आफ्टर फॉर दिस. AWL, Adani Wilmart. Okay, moving up last 3 months only. Okay, वीकली चार्ट पे अगर देखता हूँ अप ट्रेंडिंग है. डेली चार्ट पे व्हाट हैज हैपेंड, इट वाज रिट्रेसिंग हियर, 38.2 रिट्रेस हुआ एंड वहां से फिर ऊपर चला गया. इट इज बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम दिस. ओवरऑल 703 के ऊपर क्लोज हुआ है. ओवरऑल लॉन्ग है, 798 तक का टारगेट है. बट बी कॉशियस, डू ट्रेड विद द स्टॉप लॉस इन दिस. विदाउट स्टॉप लॉस इस पे अटक जाओगे. एंड जस्ट चेक द सर्किट लिमिट. द सर्किट लिमिट इज 5%. इट इज एडवाइजेबल कि इसमें 5% का जब भी सर्किट लिमिट होता है जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दैट टाइप ऑफ स्टॉक. वी डोंट डू एनी ट्रेडिंग इन दैट. ओके, ओवरऑल लॉन्ग फाइन, नो प्रॉब्लम. अदानी का नाम है, एवरीथिंग इज दैट. बट 5% सर्किट लिमिट हो जाता है तो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दैट. ओके, व्हाई? आई विल टेल यू द रीजन बिहाइंड इट. अगर 5% आप देखते हो तो विल जस्ट चेक इफ द चार्ट इज अवेलेबल. Okay, so there was a company called Mtech India. I forgot the name of the company. Mtech India का ही दूसरा नाम चेंज हो गया था. It was Castex Technology. Yeah, I remember that. Yeah, it is delisted now. Yeah, it's delisted. If you just check the chart, ऊर्जा ग्लोबल भी अगर देखोगे, you can see the ऊर्जा ग्लोबल. ये मार्केट में बहुत न्यूज था इसका. You can see over here 5% की सर्किट लिमिट का क्या हाल होता है. दिस वाज द सर्किट. 10 से कितना हो गया, 34 से लोअर सर्किट मारते मारते कितना हो गया. यहाँ कहीं एग्जिट ही नहीं मिलेगा आपको. जस्ट स्टे अवे फ्रॉम 5% सर्किट लिमिट. एक्सचेंज तभी 5% करता है जब उसमें कुछ गड़बड़ हो रही होती है या समथिंग इज हैपनिंग. ओवरऑल जो रेगुलर ट्रेंड के हिसाब से नहीं होता है, इट इज बिहेविंग अपोजिटली. सो उस टाइम पे सर्किट लिमिट चेंज होती है. या तो 2-3 सर्किट लग जाती है, या एक सर्किट लगी तो 20% की हुई, फिर 10% होती है, फिर 5% होती है. तो 5% इसके लिए रखते हैं फॉर दैट रीजन कि बहुत ज्यादा मूवमेंट इसमें हो नहीं सकता, बिकॉज इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, समथिंग इज हैपनिंग. सो दैट्स व्हाई सर्किट लिमिट गेट चेंज्ड. Okay, so just stay away from this 5% circuit limit. Bandhan Bank, last two stocks I'll be taking. Okay. Bandhan Bank is sideways right now on the daily chart. So जब तक कोई point ही नहीं है, till that time it is not breaking above this and taking the low below this. Nothing to be done. Just wait and watch on this. Okay. Infosys, after the result it came down. Okay, so now this I'll start with the monthly chart. Monthly chart पे it's trying to give you a close below this. अगर ये close हो गया तो डाउन ट्रेंड चालू होगा, but not much because Infosys is the regular uptrending stock. तो यहाँ पे you can expect around 1507. यहाँ कहीं से अगर घूमेगा तो you can think about it for the long. Overall we need to check. अगर ये लो तोड़ दिया तो maximum कितना जाएगा, 1507 तक जाएगा. So we need to check that. If I'll check the daily chart as well on this,
डेली चार्ट पे जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं करेगा तब तक शॉर्ट नहीं है. दिस वन आई जस्ट रिमूव एवरीथिंग. ओके, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा तब तक शॉर्ट नहीं है, लॉन्ग भी नहीं है, until it is not breaking the this level. So just wait and watch on the Infosys right now. Okay. Okay, guys. So last talk before I'll take Adani Power. Many of you are asking. So let's see that. Firstly, I'll just check. Same Adani Power maybe 5% circuit limit है. So just stay away. Monthly chart पे it's fine. It's moving up and up. Okay. Daily chart पे देखता हूँ तो it is trying to give you a breakout. Okay. It has given you a breakout, you can say. So overall target, you can expect it in on this, but be cautious in this since it's a 5% circuit limit. I'll suggest you just stay away from this. Your target is around 297 in this, since it has given you a breakout, but do trade very sharply in this. Put the stop losses. जो भी सर्किट लिमिट होगा उसके सर्किट लिमिट के थोड़ा ₹1 ऊपर you can put the stop loss over there. Nifty future, as I told you in the session, in the start of the session, it's overall you can expect, since it's a gap down open entry on a global market around 240 points. So intraday you need to see agar first 15-minute ka candle, if you're finding it positive, then above this high you can go long, or either you can think about 5-minute ke chart agar use karte ho, then you can take a confirmation of the indicator. Either you can say Rohit the indicator, or you can say a super trend or a parabolic, so whatever confirmation you can take it. Some bounce you can expect it about half ATR, you can say, not fully ATR. Market is gap down 240 point, gap down at 263 is the ATR value. So ATR exhaust ho jayega almost. So you can expect a 100 point, 100 or 120 point bounce back over here, and from that level again you can look after for the short opportunity. Overall trend is short. On a daily chart it is forming a head and shoulder, so you can look after for that. Okay guys, so time to stop over here. 9 o'clock sir will be taking a session from 9 to 10 intraday club. He'll be taking it. Okay guys, so thank you so much. Have a nice day. Happy trading, and do trades with the stop losses. Bye bye.